things. 25-30 क्वेश्चंस करने हैं आज के दिन में हमें. Mensuration. 25 days. पढ़ने की खुशी में. Mensuration बेटा. सर कौन सी खुशी में कौन सी दुखी में कौन सी दुखी में इतने सारे क्वेश्चन. So 7 क्वेश्चन में से मैंने 5 किए. Good. Match कर लो. First वाला is we have to find the length of the cube and volume of the cube, given that surface area of the cube is 384 centimeter square. So surface area of cube अगर सिर्फ surface area दिया हुआ है, ठीक है ना, that means we are talking about total surface area. Is that okay? Don't mistake it with lateral surface area. तो 4L square नहीं करेंगे हम. It is going to be 6L square. ठीक है? Don't mistake and equate it with 4L square, the lateral surface area of cube. Is that okay? So once we equate it with 6 into side square is equal to 384, the side will be written as surface area of the cube divided by 6. That is 384 by 6, which is 64. Root under 64 will be 8 centimeter. Therefore, length of the cube's edge is equal to 8 centimeter, and the volume of the cube will be side cube, that is 8 cube, that is 512 centimeter cube. Then comes the next question is total surface area of cylinder has to be found out in pi. It is given strictly that you can leave your, well, not strictly, but it is written that you can leave your answers in pi itself. You need not to solve it completely. Is that okay? So radius is given to be 5 centimeter and height is 10 centimeter. Total surface area of cylinder is 2 pi r into h plus r. That will be 2 pi into 5 into 10 plus 5. That will make 15 into 2, 30 into 10, 300. Nahin. 15 into 2, 30, 30 into 5 is 150 pi centimeter square. That is going to be the total surface of cylinder. When its radius and height is given to be 5 centimeter and 10 centimeter respectively. Is that okay? यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने. Very good. किया था ना? Good. An aquarium is in form of cuboid whose external measurement is 70 into 28 into 35. The base, side faces and the back face are to be covered with colored paper. The base and the side faces and the back face are to be covered with colored paper. Bacha kya? Top face. Find the area of paper needed. So side faces and back face. Side faces में यार क्या ले रहे हैं ये लोग? Face, back face, then side faces. हाँ नहीं वो इंटरप्रिटेशन की गड़बड़ी है बेटा, मैं बस सोच रहा हूँ. See, इसमें बेसिकली आपको करना ये है कि इट्स लैटरल सरफेस एरिया इज टेकन. ठीक है. The cuboid अगर रखा हुआ है, if a cuboid has been kept on for example इस टेबल पे रखा हुआ है, तो उसके 4 साइड जो होंगे वो हमको दिखते रहेंगे. एक टॉप होगा और एक बॉटम होगा. Bottom can be called as base. There is going to be 4 side faces and there is going to be 1 top. Diameter. So basically 5 faces को cover किया गया है and top को छोड़ दिया गया है. Yes, let us draw it. That's not a big deal. Cuboid is quite easier to be drawn. We just have to draw few straight lines. That is something which I can easily draw.
अभी देखो इसमें बेस क्या है, ये ब्लू कलर्ड वाला बेस है, ठीक है। चार साइड, पीछे वाला दैट इज बैक साइड, then we have green sides, these two, किधर इधर भी करेंगे बेटा, and side faces. The blue, yellow. Red. दो side. वो येलो होगा ना? कौन सा फ्रंट बेटा? साइड। फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड ब्राउन है, बेस इज ब्लू, नो इट्स ब्राउन, and left and right faces are green, bottom is, the base is blue. So ये पांच faces को हमने black paper से cover किया है. Now we have to calculate the amount of paper which is required. Is that okay? Dimensions are 70 length. ठीक है. Then there is 28 which is width. And then there is 35 which is height. Is that okay? बेस दोनों नहीं है, टॉप बेस नहीं है, या टॉप फेस जो है दैट इज नॉट कवर्ड, एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड the required area of black paper is equal to 2 length into height plus base into height and plus 1 L into B, that is base. ये base का area, base area, and this is lateral surface area, LSA. This will be equal to 2 into 70 into 35 plus base into height, that is 28 into 35 plus L into B, that is 70 into 28. This is going to be 35 को कॉमन ले लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं, तो इट विल बी 70 into 70 plus 28 plus 70 into 28. Sorry, 70 into 28. Is that okay? दोनों जगह से 70 को कॉमन ले सकते हैं, so 70 into 98 plus 28. ठीक है, this will be 70 into 126. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस गिव्स अस 0 60 seconds होगा। 8 आएगा ना, Yes, sir. Please, sir. और मैं भी सॉल्व हुआ। 8 सॉल्व में सॉल्व किया है। एक सेकेंड, 47 के 2 4 क्या है कि 1 8820 आना चाहिए बेटा, 40 नहीं आना चाहिए, 8820 आना चाहिए. आपने एक और फेस में भी डिस्काउंट कर दिया हो, क्या यूज किया है आपने? ठीक है, इसे तेरी मां को लगता है कि क्लास में फोन ही
अच्छा, आपने फ्रंट फेस को छोड़ दिया है। ओह, लेना था। मैडम मुझे तो लग रहा है कि लेना था, बट यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है। तो पीछे क्या आंसर लिखा हुआ है? ये देखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए, बट ठीक है, इसमें लिखा तो नहीं हुआ है साइड फेसेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ। सही में ऐसा नहीं आ जाएगी, हो सकता है मैं गलत हूँ। Let us check. You are right. I'm right? Yes. See, sir. For a change. Can you shut up just because you can't that doesn't mean no. Okay. Nevertheless, so basically they are not considering one of the, I mean the front face as well. So ये brown वाला face जो है, that is not. So two faces are not covered. One is top face and one is front face is not, क्योंकि दिया नहीं हुआ है. Okay. So अगर उसको हम exclude करते हैं, if we are excluding that, then यहाँ पर it will become 2BH plus LH plus LB. That is 2 into E base 28 into 35 plus LH 70 into 35 plus LB 70 into 28. अभी तीनों में 70 is common, so we can take out 70. This will become 28 plus 35 plus 28, that is equal to, let's check 91. 70 into 91, that is 6370 centimeter square. Front and top faces are covered. इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो. While revision, always keep a track on this. क्वेश्चन को मार्क कर लो बेटा, रिवाइज करने टाइम एक बार देख लेना. The internal dimension of a rectangular hall is 15 meter, 12 meter and 4 meter. There are 4 windows, each of dimension 2 into 1.5 and 2 doors, each of dimension 1.5 into 2.5 meter. Find the cost of whitewashing all 4 walls of the hall. If the cost of whitewashing is rupees 5 per meter square, what will be the cost of whitewashing if the ceiling of the hall is also whitewashed? The base is not whitewashed, so the dimension of the hall is 15 into 12 into 4 meter cube. Area to be whitewashed is equal to
area of four walls plus area of roof minus area of four windows and plus area of two doors. Now area of four walls are going to be equal to twice LH plus BH. Area of the roof is L into B, and from this we have to subtract 4 into dimension of window, which is 2 into 1.5, 2 into 1.5 plus 2 doors, that is 2 into 1.5 into 2.5. This makes it 2 into L into H. L is 15 and height is 4. So it is 2 into 15 into 4 plus base into height, that is 12 into 4 plus L into B, that is 15 into 12 minus, this is going to be 3 fours are 12 plus 3 into 2.5 is 7.5. This much meter square. Is that okay? इनको सॉल्व कर लेते हैं. See, यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, 12 plus 15 27 हो जाएगा. So it will be 2 into 4 into 27 plus 15 into 12, that is going to be 180. ठीक है? This minus 19.5 centimeter square. Sorry, meter square. This is going to be 216. 27 2s are 54. 54 into 4 is going to be 216. 216 plus 180 is 396 minus 19.5 meter square, or it will be 376.5 meters square. Cost of whitewashing. Cost of whitewashing area into a rate, that is 376.5 into 5, that is equal to rupees 1882.50. Is that okay? Next is a swimming pool is 50 meter in length. हाँ, मैं क्वेश्चन तो पढ़ लूँ, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं उसको? वेरी गुड, मैं किया है. स्मार्ट फिर आजकल थोड़ा पढ़ने लगी है. गुड गुड.
Should I go to the next page? Question number 5. Swimming pool is swimming pool dimensions. Generally, mensuration questions में ना you have to write what all informations are given. वैसे हर जगह पे यही करना होता है, informations given को आपको ऊपर में highlight करना होता है, ठीक है? देखो मार्क्स एसेस तो नहीं मिलता है. आई शुड नॉट कीप यू इन फूल्स पैराडाइज. तो मैंने ऊपर लिखा नहीं क्वेश्चन ठीक मैंने है. बस 90 क्वेश्चन. बट हाँ ये जरूर होता है कि it looks good. Number 1, chances of making mistake will be lesser. Number 3, नीचे में कुछ गड़बड़ किया है आपने तो थोड़े ग्रेस मार्क्स. मतलब ये इंफॉर्मेशन के बाद आप फॉर्मूले लिखते हो और मान लो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर देते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. ये नहीं लिखते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो और नंबर कुछ लिखा आपने और फिर गलती कर दी तो आपके नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है. यहाँ पे ये चीज आप लिख देते हो और मान लो नीचे में मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तो एटलीस्ट टीचर हैव अ आइडिया कि यू हैव आइडेंटिफाइड द वेरिएबल्स इन नाइस मैनर और इन करेक्ट मैनर एंड वहां पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट में कुछ मार्क्स वो दे देंगे अगर कैलकुलेशन गलत हुआ तो. ठीक है. अगर सपोज ये आप नहीं करते हो एक्सरसाइज, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो और फिर आपने कुछ एरर कर दिया, वहां पर द टीचर विल बी नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू गिव यू एनी मार्क्स. इज दैट ओके? तो सिर्फ ये लिखोगे तो कुछ फायदा होने के चांसेस तो मार्क्स के टर्म्स में कम है. बट अगर कुछ आगे चल के गलती होता है तो ये लिखने की वजह से आपको कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएंगे. इज दैट ओके? ओके. Find the cost of cementing its floor and walls at the rate of 27 square per meter. Cost of cementing is equal to area to be cemented into rate. Area to be cemented कितना है? Lateral surface area plus area of base. Is that okay? Into rate. Now we can fit in the data. Lateral surface area is going to be twice LH plus BH plus LB into rate is 27. So क्या हो गया? क्या? It's dimension. अबे यार. It's dimension. एक्चुअली वो दो वर्ड्स कंबाइन हो गए दिमाग में. मैं आगे का सोच रहा था मेजरमेंट डायमेंशन लिखो तो डायमेंसुरेशन. आई एम सॉरी एंड थैंक्स फॉर करेक्टिंग. funny. 50 into 2.5 plus 30 into 2.5 plus L into B 50 into 30 What? into 27. Yes, beta. So for the formula, मैंने 2h in the bracket L plus B. It's the same thing, no? It's the same thing.
मैं वही करने वाला हूँ। देखो 2 into 2.5 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो इट विल बिकम 5 into 80 हो जाएगा, 50 plus 30, अब प्लस 50 into 30 कर लेंगे, into 27, लास्ट वन this will make it 400 plus 1500, 1900 into 27, 27, it will become 51300. 513, yes, rupees 51300, ठीक है. Next thing is the floor of a rectangular hall has a perimeter 236. The floor of a rectangular hall is 236 meter. Its height is 4.5. The cost of painting its four walls, doors and windows be ignored at the rate of 8.4 per square meter. So perimeter of base दिया हुआ है, base is 236 meter, height यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, this is equal to 2 into L plus B, ठीक है. Then height is equal to 4.5 meter. Therefore, lateral surface area of wall, it will be equal to 2 into H, yeah, 2 into L plus B into H. That will be 236 into 4.5 meters square. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, And 1062. 45 1062 आ रहा है. मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. फाइनल 36 चौके 144 प्लस 800 944 118, हाँ 944 प्लस 110 से 44 1062 ना, ठीक, 1062 मीटर स्क्वायर. Cost of painting area to be painted into rate, that is 1062 into 8.40, से मल्टीप्लाई करके आता है 8920.80. 8920.80. very good. सही बोल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, सो अरे तो मैंने सॉल्व किया. क्या आंसर तो मैंने बोला ना. मैंने बोला तो मेरा छापा है. मैं उससे पहले a cuboidal fish tank has a length of 30 centimeter. So dimension of fish tank L is equal to 30 centimeter, B
B is equal to, breadth is equal to 20 centimeter and H is equal to 20 centimeter. The tank is placed on a horizontal table and it is 3/4 full of water. Find the area of tank which is in contact with water. ठीक है? So the area which is going to be contact with water, that is going to be the 3/4 area. That is 3/4 of lateral surface area. ठीक है? And plus area of the base. Are we getting this point? देखिए फिर से एक क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा मुझे. So just wait for few seconds till the time I draw it. This is sort of fish tank. I'm assuming it to be fish tank. So it does not appear to be one. ठीक है? I don't like fish. I'm a vegetarian, so I don't want to fish there. मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया नूडल्स. अच्छा फिश बहुत टाइम से नहीं खाया तो वेजिटेरियन हो गई. नहीं सुबह सही है बेटा. कोई बात नहीं बेटा. I'm not against non-vegetarians. वेजिटेरियन बोलते मैं नहीं खाऊंगी. उसके अगले दिन मैं खाया. मेरे को बताया तेरी वो मेरे पापा बोले थे खा ले चलता है. मेरा मन करता है पर मेरी मम्मी बोलती है मत खाओ. मेरे पापा मैं वो मेरा जेल फिक्स में ओके देखो अभी यहाँ पर हो क्या रहा है. अगर मैं इसको 3/4 फिल करता हूँ तो पानी कहाँ तक आएगा? Up to the height of 3/4, right? If I fill it, it is going to have water till 3/4 of it. हाँ मुझे पता नहीं था बेटा. अभी वॉल्स बनाने के लिए है. और किस लिए ब्राउन करूंगा? मेरा पानी ग्रीन है. आई नो. अबे नहीं करना है मुझे ग्रीन करना है. नहीं. अबे मुझे मछली बनाने नहीं आता है ना. कैसे? हाँ तुम बना के खा लो. चलो तुम लोग बिना बात के मस्ती करते हो. ठीक है. सो हाइट में इट इज गोइंग टू बी फिल्ड अप टू 3/4 हाइट. इज दैट ओके? यानी लैटरल सरफेस एरिया जो मेरा है उस लैटरल सरफेस एरिया का 3/4 एरिया इज गोइंग टू बी फिल्ड and the area of base will also be in contact with water. Is that okay? So area of tank in contact with water area of tank in contact, oi don't disturb, in contact with water is equal to 3/4 into lateral surface area of tank plus area of base. That is equal to 3/4 into 2 into L plus B into H plus LB. That is equal to 3/4 into 2 into L plus B is 30 plus 20 into 20 plus 30 into 20. यूनिट क्या रहेगा?
centimeter square, and we can solve it very quickly. It is going to be 4 5s are 20 and 5 2s are 10. 10 into 3 30. 30 into 50 1500 plus 600, that is 2100 centimeter square. This much area will be in contact with water. Is that okay? Now let us come to question number 8. The volume of a cuboid is 440. हाँ वो अब रहने दो बेटा. The volume of a cuboid is 448 centimeters square. Okay, sorry, centimeter cube. Its height is 7 centimeter and base is a square. Find the side of the square base. So volume of the cube is given. Question 7. Question 8. Volume of cuboid is equal to क्या कर रहा है? So मैं एक बैच आगे आ सकती हूँ? Yes. हाँ बिल्कुल आ जा. तुम 3 लोग में भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्रिएट हो जाते हो तो तो बाहर पीछे उड़ के आ रहा है. बोल सकता है ना? बोलूँगा तो और डिस्टर्ब होगा. और ये एक बार चेक करो. करेगा तू? मारेगा. चुपचाप करो मुझे. Okay. Base is square with side L. Therefore, area of base of a square base is equal to L square. Therefore, volume of cuboid is equal to area of base multiplied by height, and that is equal to 448. Implies L square into 7 is equal to 448. This means L square is equal to 448 upon 7, that is 64. That implies L is equal to root under 64 is equal to 8 centimeter. Now, number 1, side of square base is equal to L is equal to 8 centimeter. The second one is surface area of cuboid. Surface area of cuboid. Six into LB, sorry, 6 into LB, 2 into LB plus LH ऐसे कि ऐसे. plus BH. क्या बेटा? ऐसे कि ऐसे. It's TSA, total surface area. Surface area का मतलब total surface area. And this is also equal to breadth. L is equal to B is equal to 8 centimeter. So it will be 2 into 8 into 8 plus 8 into 7 plus 8 into 7. ठीक है? Or it will be 56 plus 56 plus 64. 56 plus 56 is 112 plus 64 is 176. ठीक है? 176. 160 है ना?
64 था ना. 56 plus 56 is 112. Oh, 112 plus 76 is 108. Sorry, 178. 64. अरे 150 नहीं 56 plus 56 is 112. So plus 61, 178. 72 6 था बेटा. So 176 है. हाँ, तो और एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ा दे? Oh, oh plus 2. So 2 into 176 is 352. ठीक है. Centimeter square. ठीक है. This is going to be the surface area of cuboid or total surface area of cuboid. I hope that this will be given also. एक बार just check कर लेता हूँ ये भी. Hopefully I'm right. It's total surface area का मतलब है total surface area. चाहिए तो इसको हाईलाइट करके और नोट करके रख दो. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड का मतलब टोटल सरफेस एरिया. बुक में लिख सकते हो या नोटबुक में भी लिख सकते हो. हाँ, A is equal to total surface means total surface area. Can I go to the next page? Question number 9. Length, breadth and height of a rectangular solid are in ratio of 5:4:2 if its total surface area is 1216 centimeter square. Find the volume of the solid. ठीक है. So L is to B is to H is equal to 5:4:2 for a cuboidal solid. This means L is equal to 5x, B is equal to 4x, and H is equal to 2x. PSA of cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus LH. क्या हो रहा है? Is equal to 1216. This implies 2 into 5x into 4x plus 4x into 2x plus 5x into 2x is equal to 1216. This means 20x square 2 into 20x square plus 8x square plus 10x square is equal to 1216. This makes it 28 plus 10, 38 into 2, 76. But 2 into 38 ही लिखेंगे into x square is 1216. That implies x square is equal to 1216 divided by 2 into 38. ठीक है. इसे कैंसिल करते हैं. This will become 608. Then एक और 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको. It will become equal to 19 and this will become equal to 304. Then with green I will try to cancel this. It will be 19 1 ja 19. The remainder will be 11. 19 6 ja 114. Yes, very good. So this gives us, this implies x is equal to root under 16, that is 4. Therefore
L is equal to 5x is equal to 20 centimeter. B is equal to 4x is equal to 16 centimeter, and H is equal to 2x, that is 8 centimeter. Therefore, volume of cuboid is equal to LBH is equal to 20 into 16 into 8 centimeter cube. That is 16 8 is 128. ठीक है 128 into 20 is 2560 centimeter cube. Okay. 5, 7, 6. Hmm. Huh? 560. 16 8 is 128 होगा ना. तो ये सब फॉर्मूला 5, 7, 6. Five, 7, 6, 0. 6 0 wrong. ये तुम गलत इंटर कर रही हो. 18 से मल्टीप्लाई क्यों कर रही है? अच्छा 8. चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 10. There is a rectangular room which is 6 meter long, 5 meter wide, and 3.5 meter high. It has two doors of size 1.1 meter by 2 meter and three windows of size 1.5 meter by 1.4 meter. Find the cost of whitewashing the walls and the ceiling of the room at the rate of 3.5 per square meter. Sorry, 5.3 per square meter. So, dimensions of room. Length is equal to 6 meter. Breadth is equal to 5 meter. Height is equal to 3.5 meter. Two doors of dimension is equal to 1.1 meter into 2 meter and three windows of dimension 1.5 into 1.4 meter. Area to be whitewashed. Area to be whitewashed. This will be is equal to LSA, lateral surface area of room plus area of ceiling minus area of windows plus area of doors. That will be 2 into L plus B into H plus LB minus 3 into 1.5 into 1.4
plus 2 into 1.1 into 2. That is 2 into L plus B is 11 into H is 3.5. 5 plus, sorry, 6 plus 5 into 3.5 plus LB, that is 6 into 5 minus, this is going to be 14, sorry, 1.5 into 1.4 is equal to 2.1 into 3 is 6.3 plus this is going to be 4.4. This together makes 7 into 8, 56. Sorry, 7 into 11, 77 plus 30, 107 minus 10.7 is equal to 96.3 meters square. Cost of whitewash is equal to area to be whitewashed into rate, that is equal to 96.3 into 5.30. It makes it 159. So 18 plus 15. So that is 333. So these 470 plus 3 480 plus 510. Yes, 510.3. क्या हुआ? नहीं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना आप लोग को बेटा, मैं दिमाग से कर रहा हूँ, आप लोग कम से कम पेपर पे मल्टीप्लाई करके करो, ठीक है? डोंट यूज कैलकुलेटर्स। बाकी आप लोग की मर्जी, यू गाइस आर स्मार्ट एनफ। तुम लोगों को मैं पढ़ाने आया हूँ कि तुम लोगों का जब्ती चालू करूं और कुर्की यहाँ पर चालू करूं मैं। कुर्की मींस सीजिंग योर मटेरियल्स। आपकी मर्जी बेटा, रखना है रख दीजिए, आप अपने बैग में भी रख सकती हैं, एंड यू कैन स्टिल नॉट यूज इट, you can keep it on the desk and still not use it. That has to come from your within. I believe and expect my students to be disciplined. Rest all is up to them. The cuboidal block of metal has dimensions 36 centimeter by 32 centimeter by 0.25 meter. It is melted and recast into cube of H 4 centimeter. How many such cubes can be made? What is the cost of silver coating the surfaces of the cube at the rate of 0.7 per square centimeter? So dimensions of cuboid is is equal to 36 centimeter into 32 centimeter into 25 centimeter. It's 0.25 meter, that is 25 centimeter. Okay. Dimensions of cube. Dimension
of Q is equal to 4 centimeter into 4 centimeter into 4 centimeter. Therefore, number of cubes that can be made from recasting cuboid is equal to volume of cuboid divided by volume of cube, which is equal to 36 centimeter into 32 centimeter into 25 centimeter divided by 4 centimeter into 4 centimeter into 4 centimeter. फिर इनको cancel करेंगे तो 4 is going to take away this. The second one is going to take away and make it 2. The 2 can be cancelled to get 2 over here, and then using red, this 2 can be cancelled to get 18 over here. 25 into 18 is going to be equal to, which is going to touch us 450. 450 cubes can be. Okay. So first part is done. Number of cubes made by recasting is equal to 450. Yes, beta. 2 से डिवाइड किया ना बेटा. ठीक है, तो 18 into 25 is 450. ठीक है. अभी सेकेंड पार्ट इसका जो है that is what is the cost of silver coating. Can I go to the next page? Yes, sir. यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ. Cost of silver coating is equal to area to be silver coated into wheat. That is 6 into L square into 450 into 0.75, that is equal to 6 into 4 square, 4 into 4 into 450 into 0.75. That is going to give us 4 into 0.75 is 3. 3 into 4 is 12. 12 into यहाँ पर 4 into 0.75 is 3. इस 4 को साइड में रखते हैं.
450 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, it will become 1800. 1800 into 18 will be 32400. Is that okay? This is the amount we are going to take in order to paint it, silver coat it. कैसे हुआ? I can mark it. This 4 into this is going to give us 3. This and this is going to give us 180, sorry, 1800. Now 3 into 6 is 18. 18 into 1800 is 18 square is 3240. ठीक है, 32400 हो जाएगा. That is our answer. Let us come to question number 12. Three cubes of silver with each 3 into 4 into 5 are melted and recast into a single cube. There are three cubes of ages. पता नहीं बेटा, 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Therefore, नहीं, 15, 16, 17, 18 करा दिया था. So the volume of these 3 cubes. नहीं, एक काम करता हूँ. So this is going to be 27 plus 64 plus 125 centimeter cube. अबे किसको इमिटेट कर रही है तू? 7 4 11 11 5 16 के 6 1 6 2 8 2 10 11 1 1 1 2 216 centimeter cube. So total volume of silver is equal to 216 centimeter cube if this is recast into one large cube of side L, then volume of this cube is equal to L cube is equal to 216 centimeter cube. That implies L is equal to cube root of 216, that is equal to 6 centimeter. Now rate of gold coating this new silver
cost of gold coating this new silver cube is equal to area to be coated into wheat, that is equal to 6 L square into rate, which is 3.5 rupees per centimeter square, which is equal to 6 into 6 into 6 into 3.5. So, बोलो बेटा अपने cost of gold total this क्या? Silver cube. So this is going to be 21 new it's new silver. हाँ वो पहले S लिखा गया था गलती से, फिर मैंने ओवरराइड कर दिया. The new silver cube is equal to area to be coated into rate 6L square into 3.5. This is going to be 36 and this is going to be 21. So it is 36 into 21, that is rupees 21 6 are 126. So it will be 6 and 12, 21 6 are 63 plus 12 is 75. So it is going to be 756. 575757. ठीक है. 13. The curved surface area of hollow cylinder is curved surface area of hollow cylinder is equal to 4375 centimeter square. It is cut along its height to form a seat of width 35 centimeter. Find the perimeter. Okay. So perimeter of the of rectangular seat is equal to what? See, the curved surface area is given to be 4375 centimeters square and height to form cut along height, its height. After cutting along height, it forms a seat of width 35. So basically height जो है that has got transformed into width of the seat. So बाकी का जो बचेगा ये तो पूरा कर्व सरफेस एरिया है. दैट मींस उस सीट का पूरा एरिया इज 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर. जिसमें से विड्थ इज दिस मच. तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट विल बी लेंथ इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylinder upon width of seat. ठीक है, that is equal to 4375 upon 35. This is going to be
5 से कैंसिल करते हैं, that will become 8, It's 75. 7, 5. फिर 7 से कैंसिल करते हैं, it is going to be 12, 125. 5. So it is going to be 125 centimeter. Now perimeter of seat Two E is answers equal मिला, to sir. 2 into L plus B. That is 2 into 125 plus 35 centimeter. This is going to be 160 into 2, that is 320 centimeter. Is that okay? Which can also be written as 3.2 meter. Clear? Last one. The road roller has a diameter of 7.7 meter and its width is 0.7. 1.7 meter and its width is 1.2 meter. Find the least number of revolution that the roller must take in order to level a playground of size 120 into 44 meter. Same question asked. Very good, Peter. Question number 14. See, if roller is going to roll, its curved surface area is the one which is going to be transversed in each round. एक round जब लेगा तो उसका जितना curved surface area है, that will be rolled up. Are we getting this point? So dimension of roller, dimension of roller, radius is equal to diameter upon 2, that is 0.7 by 2 or 0.35 meter. Height is equal to 1.2 meter. So in one rotation or one revolution, this roller will cover an area equal to its curved surface area, that is equal to 2 pi RH, that is 2 into 22 by 7 into 0.35 into 1.2 meter square. Number of revolutions needed is equal to total area to be leveled divided by area covered or leveled in one rotation. Area leveled in So rotation and revolution. one revolution. That is 120 into 44 divided by 2 into 22 by 7 into 0.35 into 1.2. This is equal to, इसको दोनों कट करूंगा, it is going to be 0.1
0.05 इन दोनों को कट करूंगा, it will be cancelled. क्या हुआ बेटा? धीरे बोलता हूँ मतलब 1.2 120 divided by 1.2 is 100 and this is divided by 0.05, it will become ये डेसिमल घटाऊंगा या इसको जनरली भी डिवाइड करूं तो 1 by 0.05 is 20, so it is going to be 2000 revolutions. Is that okay? With this we are done with the exercise 18.4. Now we will take up higher order thinking questions. If you guys want, no, there is no choice for you guys, sorry. Wait for a few more time and I can complete this. 7:30 beta. 7:30 Hmm. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन से पहले खत्म हो गया Yes बेटा, फिर यहाँ बिठा के मैं तुम लोग को क्या करूँ, मुझे भी कर 35 of book and higher order thinking skills. एक चीज देखने को मुझे, इसने क्या बोला था? अच्छा, मुझे पता है वो भी joining only. Yes. Hello. One is question number 1 of higher order thinking. The length of room is 50% more than its breadth. ठीक है? So let breadth is equal to x. Therefore, length is equal to 50% x plus 50% of x. That is 1.5x. ठीक है? The cost of carpenting the room at the rate of 38.5 meters square is 924. At the rate of 38.5 meters square is 924 and the cost of papering the walls at 3.30 meters square is 214 per 214.5 rupees. If the room has one door of dimension 1 into 2 and two windows each of dimension 1 into 1.5, find the dimensions of the room. So there are two things. The cost of carpenting the room. करूँ क्या 1.5x के बाद कुछ नहीं बेटा, 1.5x just that it. It dash नहीं है, full stop. ठीक है. यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, कारपेंटिंग और द रूम. कारपेंटिंग द रूम का मतलब है बेसिकली फ्लोरिंग करना है इनको, and the flooring का cost is 924 at the rate of 38.5. Is that okay? Carpenting the room
flooring the room. 38.5 rupees per meter square is rupees 924. Cost is equal to rate into area of flooring. Is that okay? That implies 924 is equal to 38.5 into x into 1.5x. That gives me 1.5x square is sorry, या फिर x square is equal to 924 divided by 38.5 into 1.5. Is that okay? इसको सॉल्व करेंगे 1.5 से इसको कट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 90 0 90 24 15 15 616 आएगा ठीक है और फिर से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और 11 3s are 33 और 11 5s are 55 इसको करेंगे तो 11 5s are 55 and 11 6s are 66 3.5 into 56 it is going to be 35 7 oh, 0 35 so 21 616 हाँ ठीक है it is going to be 16 this gives me x is equal to root 16 that is 4 therefore b is equal to 4 meter and L is equal to 6 meter दो डायमेंशंस पता चल गया हमको दूसरी चीज इसमें दी हुई है the cost of papering wall and it has one door and two windows ठीक है पेपर किसको करेंगे वॉल्स को तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग the wall is equal to rate into rate of covering wall. Covering means papering or papering wall into area to be papered. That is equal to this cost of covering wall is 214.50. This is 3.3 into area to be papered means lateral surface area that is 2 into L plus B
into H minus, बोलिए बेटा, it will get over by 7:30 बेटा. हाँ मैं भी करा ही रहा हूँ बेटा, मैं मस्ती के लिए तो कर नहीं, रोका नहीं है तुम लोगों को यहाँ पे कि डांस करके दिखाओ, ऐसा तो नहीं है ना. हाँ तो फिर क्या बोल रहे हो, मैं थ्रू आउट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ना आप लोगों को, कि आपके साथ चिटचैट कर रहा हूँ. हाँ तो फिर सर मेरी मम्मी बात कर रही है, आई थिंक आपसे बात कर रही है। हाँ वो ठीक है, मैं, हाँ बुला लो, अंदर ही बुला लो, ask her to come inside so that, मतलब अगर मैं चिटचैट कर रहा होता यार तो फिर ठीक है, तुम बोलते तो आई वुड हैव accepted it. It's a mistake on my part. 2 into 1 into 1.5 is equal to, so now we need to solve this. This is going to be 214.5 divided by 3.3. Here we are going to put the rest of the values. This is going to give me 2 into L plus B. L is 6 and B is 4, which we have got from previous part. So it will be 2 into 4 plus 6 into H. This H is not known and we have to find it out. Minus, this is 1 into 2, 2, and 2 into 1.5, that is 3. So it is going to be 2 plus 3, that is 5. We will cancel this, try to cancel it, decimal will be cancelled. Then there is going to be 11, 3 11s, and from here we are going to get 715. And then we are going to have 65. 11 6 are 66, remainder will be 5, and 11 5s are 55, and we get 60. Yes, we get 65. We add 5 to it, it is going to be 70. That is equal to twice into 10 into height. This finally gives me height is equal to तो आपने ना 70. बेटा ये 5 लेफ्ट से राइट आएगा तो प्लस हो जाएगा ना. डू आई नीड टू मेंशन दैट? I just 3.5. Yes. 70 by 20, that is 3.5 meter. So dimensions of the room is dimensions of the room is equal to, yeah, the room is L is equal to 6 meter, B is equal to 4 meter, and H is equal to 3.5 meter. Okay. The second one is the barrel of a fountain pen, cylindrical in shape, is 7 centimeter long and 5 mm in diameter. A full barrel of ink in the pen will be used up when writing 310 words on an average. How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? Answer to correct, correct to nearest 100 words. So we have been asked ki how many words can we write? Or see, it's like we have a ink bottle जिसके अंदर में we have 1/5 of the word bottle ink containing 1/5 of a liter. So there is 1/5 of a liter, matlab 200 ml ink is there. Is that okay? 200 ml का मतलब होता है 200 centimeter cube. Is that okay? और there is a pen जिसका barrel यानी इस टाइप का जो इसका पोर्शन होता है
इसकी कैपेसिटी कितने की है? सो द रेडियस ऑफ द बैरल इज 5/2 mm, that is 2.5 mm millimeter. This means 0.25 centimeter. ठीक है? And height is 7 centimeter. So volume of the barrel will be volume of barrel is equal to pi r square h, that is 22 by 7 into 0.25 into 0.25 into 7. 7 will get cancelled. This is 0.5. 2 into 0.25 is 0.5 into 11 is 5.5 into 0.25 centimeter cube. ठीक है? Now this much volume of ink is able to write 310 words on average. A volume of 5.5 into 0.25 centimeter cube ink can write 310 words. Therefore, 200 centimeter cube ink can write 310 into 200 divided by 5.5 into 0.25. This is going to give me, इन दोनों को cancel करूंगा, it is going to be 800 डेसिमल को कैंसिल किया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया, this is going to be 11, this is going to be 2, डेसिमल को हटाया, मल्टीप्लाइड बाई 10 किया, ये 11 और ये 2, this is going to be 1600 into 310, 310 into 1600 by 11. 16 1 is 16 1, 16 3s are 48 plus 1, 49, 000 divided by 11. This is going to be 11 4s are 44, remainder is 5, 56, 11 5s are 55 plus 160, 11 9s are 99, 1 0 9 and 0.99. So it is going to be approximately 4500 words that can be written. Includes to nearest 100 words देना है. So it is going to be 4500. ठीक है? Are we getting this point? पक्के से? So बाकी को बहुत ओए? नहीं, एक सेकंड, जो इसमें नंबर्स थोड़े से गड़बड़ आ रहे हैं मेरे. 45100 है. क्या गड़बड़ किया है डिवीजन में? 496 हाँ कर ले एक बार. बट ठीक है, आई थिंक मैंने गड़बड़ किया है, ये मुझे अब समझ में आ गया. तो दोनों को डिवाइड 11 4 0.5
यहाँ पर 0.9 है ना, हाँ ठीक है, वो एक डेसिमल और छूट गया वो मुझे लगा, सो इट विल बी इट इज 4 और 3 zeros है. 5 It's 45,000 0 zeros 90. right 090.9 है, Yeah. so this is going to be close to 45100 words. ये 90 हो गया वर्ड्स, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज 100. ठीक है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में बोला गया है नियरेस्ट 100 में आंसर देना है, तो उसके नियरेस्ट 100 कौन है बाकी तो हमको हम लोग दे दो. बेटा, नहीं होगा तुम लोगों से. सर मैंने प्लीज हो जाए. कोशिश कर सकते सर हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. सॉरी हार नहीं होती. ठीक है, चलेगा, थैंक यू. आई एग्री, बट मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों से होगा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कराना पड़ेगा. HOTS page 315 question 3 and 4 plus page 313 and सर मल्टीपल चॉइस 314 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू. question 1 question 2 sorry fill in the blanks sir and question 3 to question 17. सर ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस और ये दो क्वेश्चन ना समझा सकते हैं. ये सारा होमवर्क है आप लोगों का. तो पिक्चर ले You सकते हैं. guys have to, yes please. या मॉम को आप अपने भेज दीजिए, मैं एक बार बात कर देता हूँ. या गुड इवनिंग मैम. पहले तो हमारे बच्चों का बताइए कैसे जा रहे हैं ये लोग. ओह, थोड़ा सा बेटर हुई है मैम. थोड़ा हाँ, मतलब बेटर इन उस सेंस नहीं, बट इंटेंशनली थोड़ा बेटर लग रही है मुझे. बेटर लग रही है. थोड़े सीरियस हुए हैं पहले से. That is what I'm trying Yeah, to say. that is very important कि serious. Yes, they have क्योंकि now. मेरे वाले की तो प्रॉब्लम वही है कि आपको पता है इसका ना फोकस नहीं है, इसको चीजें बहुत लेट समझ आती हैं. नहीं नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा, नहीं. फोकस नहीं है, हाँ, दैट इज द वर्ड. लेट समझ में नहीं आता है उसको, अच्छा. ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो समझती है, शार्प है, इंस्ट्रक्शन समझती है. द ओनली वर्ड थिंग इज she lacks serious, she used to lack seriousness. Correct. She is now more serious and I'm happy. I trust your words always. I couldn't see her seriousness at all. नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब अब जितना वर्क करके आती है उसके हिसाब से मुझे सीरियस लगती है. जैसे होमवर्क दिया, अटेम्प्ट करके आती है, पहले नहीं आती थी. पहले नहीं नहीं बट आती. सर मतलब she doesn't have value of numbers, she doesn't have hunger of numbers कि I have to achieve this, I can do this. उसका है कि मम्मा जी आपको पता है ना मैं ये नहीं कर सकती, मैं मेरे से नहीं होगा. मतलब उसने अपने आप को ना क्या बोलते हैं अंडर एस्टिमेट कर रखा है कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये कर नहीं वो सकती, चली ये गई क्या? पॉसिबल ही मैं नहीं. एक बार बुलाऊंगा उसको. मतलब शी लेफ्ट आई थिंक. तो मतलब अगर आप जब भी होते हैं हाँ, हाँ. उसको दो में घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम तो वो उस चीजें हर sense में. रोज ही अच्छा बोलते नहीं, ये हैं. आपने हाईलाइट किया तो अच्छी बात करी हाँ. आपने. हाँ, दैट आई विल टेक केयर ऑफ. हाँ. नहीं, वो अंडर कॉन्फिडेंस रहने वाला उसका फेज अब नहीं है. पहले अगर होता, जैसे जिस तरीके से जिस लेवल की सीरियसनेस उसके अंदर आ गई है और जिस तरह की वो बच्ची है लर्निंग वाइज, और अंडर कॉन्फिडेंस रहना इज नॉट द राइट फ्रेम ऑफ माइंड फॉर हर नाउ. ही शुड बी नाउ अ बेटर फाइटर, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है. करेक्ट. ठीक है. थोड़ी सी लैक जो उसके अंदर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स, नंबर क्रंचिंग पर हमें लाइक थोड़ा ध्यान देना होता है. मोबाइल कैलकुलेशंस में नहीं जाना होता है. वो मैं थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ उसके अंदर.
she tried to do it through mobile, Correct. हो गया आंसर आ गया हाँ, काली हाँ, से। हाँ, I वो know. चीज या तो मेंटली या नहीं तो पेपर पर करिए आप, टाइम लीजिए, हम्म, डू इट एंड देन गेट द आंसर। और वो चीज सर आप ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है कि हम तो बहुत सालों से देखते ही आ रहे हैं कि शी इज नॉट डिपेंड ऑन मोबाइल, मतलब नहीं वो नहीं, हाँ नहीं ठीक है, अभी मैं मगर स्ट्रिक्टली वो थोड़ा कुछ कर चीजें लूंगा। हैं सर, आप थोड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल यस करते यस। हो। मतलब जब वो स्कूल से आते, मम्मा यू नो व्हाट, आई गॉट 21 आउट ऑफ 25 एंड शी इज वेरी हैप्पी विद द 21। आई डोंट नो, मतलब शी डजंट हैव हंगर ऑफ नंबर के व्हाई चार नंबर कहाँ कटे उसको। अगर क्वेश्चन कोई गलत हुआ है, इसके चार नंबर किसी क्वेश्चन में कटे हैं, उसको घर पे आके वो नंबर पे ध्यान ही नहीं देना, वो क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देना कि मुझे वो कौन से क्वेश्चन में नंबर कटे हैं, मुझे भी देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, सर से पूछना है, सर का दिमाग खाना है कि सर इस ये क्वेश्चन मुझे चार दो, ताकि अगर इसका पांचवा क्वेश्चन इसके डिफिकल्ट लेवल में आता है तो मैं राइट। सॉल्व कर सकूं। वो वाली हंगर इसके अंदर नहीं है, बिकॉज शी इज सेटिस्फाइड विद 15 20 21, शी डजंट नीड ऑफ 25। तो वो चीज हम तो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम तो जितना प्यार से उसको हैंडल कर सकते थे कर सकते हैं। आप इनके अंदर एक चीज ये पैदा कीजिए कि तुम लोग नंबरों के लिए खुद से लड़ो, कि हमें बेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते। इसने तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। मम्मा आपको पता है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। मतलब दिस नहीं इज वो कम्प्लीटली स्टेज तो रॉन्ग। नहीं है इसका, ये फिर थोड़ा मेहनत से फिर भाग रही है। हाँ वो पर मैंने। ये मतलब अभी का असेसमेंट जो मैं बोलूंगा, अगर ये चीज इसका 3-4 महीने पहले होता तो फिर मैं, इट वाज डिफरेंट। राइट, इट वाज अ डिफरेंट केस। बट विद द लेवल ऑफ सीरियसनेस, एटलीस्ट होमवर्क करके आती जो है रेगुलरली, पहले नहीं आती, अभी आती है। दैट शोज अ लेवल ऑफ, जो भी रीजन हो, मतलब आप फोर्स करती हो उसकी वजह से करती हो या फिर जैसे भी करती हो, बट वो एक लेवल ऑफ सीरियसनेस ऊपर तो गया है ना। सो लुकिंग एट दैट, एंड वो कर पाती है, जैसे आपके सिर्फ फोर्स कर देने से ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता होता तो वो कर पाती है, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल तभी है, वो कर तभी पा रही है जब कुछ तो समझ में आ रहा है उसको, वो राइट। तो है सर, क्योंकि मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर Okay. मतलब मेरा खुद का टेकअप, मेरी एनर्जी, हाँ हाँ फोकस, मतलब आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। और पिछले हाँ 3 महीने तो आई चेंज अ लॉट, क्योंकि मुझे स्कूल में टीचर से कंप्लेंट्स मिली थी कि हाँ शी इज डूइंग दिस इज व्हाट इन द स्कूल, सो दिस इज द 8th स्टैंडर्ड, यू नीड टू बी फोकस। तो उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की है। तो आई थिंक शी, मुझे नहीं पता, ये आपको पता है, वो करके आती है। नहीं नहीं, मुझे पर मुझे पता एक है चीज और मैं बताइए ये कि अगर फीडबैक दे रहा आपने हूँ। 10 क्वेश्चन दिए हैं, वो 10 में से मतलब वो कितने गलत करते हैं, मैं कितने सही करती हूँ? नहीं, वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सही करके आती है, ओके। जो करके आती है वो सही करके आती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूरा कंप्लीट करके आती है। जैसे आपने ये वर्कशीट दी थी उस दिन, हाँ तो मतलब वो उसको करने में ही डर रही थी, और जो उसने क्वेश्चन किए, ये वाली जो वर्कशीट है आपने दी थी, हाँ तो वो करने में ही डर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इसको डरना क्यों है। मम्मा ये बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, तो उसने हार्डली 8-9 क्वेश्चन मुझे लगता है किए होंगे, बाकी छोड़ दिए जे बोल के मम्मा ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरा लेवल ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों पता बोल नहीं, रही देखिए थोड़े डिफिकल्ट तो है ये है। हाँ क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट। इसमें मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, दीज आर बिट डिफिकल्ट,